हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। यू आर वेलकम इन ऑनलाइन टीचिंग। टुडे वी लर्न सब्जेक्ट साइंस स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनाइज। लेसन नंबर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनाइज हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले। तो अभी आज हम लोग इसका एक्सरसाइज कैसे करना है, इसको कैसे लिखेंगे। एक्सरसाइज आपकी बुक में दिया गया है, तो इसको एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर वन क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू फूड टाइप। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं: टाइगर, काऊ, वुल्चर, बैक्टीरिया, डियर, गोट, ह्यूमन, फंगस, लायन, स्पैरो, बफेलो, फ्रॉग, कॉकरोच, टिक। इनको जो है इनके भोजन की हैबिट के अनुसार इनको बांटना है। क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू फूड टाइप, भोजन के टाइप के अनुसार इनको जो है क्लासीफाई करना है, बांटना है। तो जो आंसर कैसे लिखेंगे: हार्वियस, कार्निवरस, ओमनिवरस, स्क्वेंजरस, डिकम्पोजर्स एंड पैरासिटिक। इस तरह से हम टेबल बना करके इनको अलग अलग जो किसमें आएगा उसमें लिखेंगे। हार्वियस में काऊ, डियर, गोट, बफेलो आते हैं। कार्निवरस में टाइगर, लायन, फ्रॉग। ओमनिवरस में स्पैरो, ह्यूमन, कॉकरोच आते हैं। स्कैवेंजर्स में वुल्चर आता है। डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया, फंगस आता है। पैरासिटिक में टिक आता है। इस तरह से इनका क्लासीफाई करना है। सीधे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैच द पेयर। क्वेश्चन नंबर 2 मैच द पेयर है। देयर आर 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरह से दिया गया है। ग्रुप ए फर्स्ट पैरासिटिक प्लांट, इंस्टिवरस प्लांट, सेप्रोफिटिक प्लांट एंड सेबेटिक प्लांट्स। ग्रुप बी में मशरूम, लिचेन, डिसोरा, कसकटा, इस तरह से नाम दिया गया है। तो आंसर कैसे लिखेंगे: पैरासिटिक प्लांट कसकटा, इंस्टिक्टस प्लांट डिसोरा, सेप्रोफेटिक प्लांट मशरूम, सेम्बोटिक प्लांट्स लीचेन। इस तरह से इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2। सीधे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड 1 ए, व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म need nutrition? Answer: living organisms need nutrition for the following reason. First one, for the continuous supply of energy to perform work. Second one, to help in the growth and development of the body. Third one, to replace the worn out tissue and to repair the damaged tissues. Fourth, to have resistance in infection and diseases. B number 2 or B, explain the process of production of food in plants. Answer number 1, the plants prepare the food by the process of photosynthesis. Plants absorb water and minerals present in the soil with the help of roots. Second one, the carbon dioxide is taken from the air and with the help of chlorophyll in the presence of sunlight. Plant prepare glucose in the process of photosynthesis. Third one, in the process oxygen is liberated by the plant. Fourth one, chemical reaction of the photosynthesis is under carbon dioxide plus water in means 6 CO2 plus 6 H2O plus sunlight upon chlorophyll is equal to food ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन C6H12O6 प्लस 6O2 इस तरह से तैयार होता है। इसको जो है केमिकल रिएक्शन इस तरह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र है, जिसको फार्मूला है 6CO2 इस तरह से लिखते हैं। वाटर को 6H2O से दिखाते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल मिलकर के फूड यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, ऑक्सीजन तैयार करते हैं। इसको C6H12O6 ग्लूकोज होता है प्लस
6O2 ऑक्सीजन तैयार होता है। नंबर सी, what is mean by parasitic plant? Name their different types with examples of each. Answer 1. The plant that depend on other plant for their nutrition are called parasitic plant. Second, the parasitic plant are heterotrophic in their mode of nutrition. Some of them lack chlorophyll and thus cannot perform photosynthesis on their own. Loranthus is partial parasitic. It sucks the nutrition from its host by prepare its own food. Fourth number, Cascata or dodder does not have chlorophyll. It looks yellow wire-like climber. Hence, it is complete parasitic on the host tree. Number D. Explain the various steps of nutrition in animals. Answer. There are main 5 steps of nutrition in animals, which ingestion, digestion, absorption, assimilation and ingestion. First one, ingestion. Feeding means ingestion. Food is taken in the body in the process of ingestion. Second, digestion. Different enzymes act on the complex food constituent and convert these into soluble nutrients. This process takes place at the different places in the alimentary canal. Third one, absorption. The digested soluble nutrients are absorbed in the blood. Fourth one, assimilation. The nutrients are taken to each cell and tissues through the blood. Circulation in the cells. Energy is produced using these nutrients. When the energy is released, then the food is set to the assimilated. Fifth, digestion. The matter that is not digested and absorbed is thrown out by the body in the last step of digestion. Number E. Name some unicellular organisms in which all life process take place within their unicellular body. Amoeba, Eglina and Paramecium are the unicellular organisms in which all the life process take place within a single cell. Question number 4th. Give the scientific reason. First one, A. Insectivorous plants are attractively colored. Answer. Insectivorous plants feed on insect. They need to capture the insect in order to attract these insects toward the plant. They are attractively colored. B. Butterflies have a long tube like proboscis. Answer. Every insect is provided with mouth parts for ingestion. It feeds on nectar and pollen from the flower. It thus has a tube-like proboscis to suck this food from flower. Question number 5th. See the question number 5th. Question number 5th is prepare and complete the flow chart according to type of nutrition. There are some words given and some places are blank. In question, some words are given: nutrition, plants, animals, autotrophic, parasitic and insectivorous, एक्टोपैरासिटिक. ये वर्ड दिए गए हैं, इसमें कुछ भरना है. हाईलाइटेड वर्ड जो है ये आंसर है. तो इस तरह से हाईलाइट करके लिखा गया है. आप जो है इसको देख करके लिख सकते हैं. न्यूट्रिशन, एंड प्लांट्स, एनिमल्स, ऑटोट्रैफिक, हेक्टोट्रैफिक, सिम्बाटिक. एनिमल्स हालोजिक, सेप्रोजिक, पैरासिटिक. इंसेक्टिवरस, सेप्रोफिटिक, एक्टोपैरासिटिक, इंडोपैरासिटिक. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा. सीधे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कैसे लिखेंगे?
Question number 6. Think and answer. Question number 6 is think and answer. सोचो और आंसर दो. We prepare a variety of food stuff and dishes at home. Are we then autotrophic organism? Answer. We prepare variety of food stuff by using grains, pulses, vegetables, etc. These provisions are given to us by plants. We may also prepare food from flesh and eggs of other animals. Third one, we cannot perform photosynthesis wherein we can actually synthesize the food matter. Hence, we are not autotrophic, we are heterotrophs. Second, question number B. Which organisms are greater in number, autotrophs or heterotrophs? Why? Answer 1. The number of autotrophs is certainly more. The number of plants should be more so that they can be enough for the herbivorous. Second one, herbivorous are dependent upon autotrophs. Third one, if autotrophs decrease in number, the heterotrophs too will starve and die. Fourth, therefore, in nature, the autotrophs are always more than the heterotrophs to balance the food chain. Question number C. The number of heterotrophs found in desert region is smaller, however, they are found in greater number in the sea. Why is this so? Answer 1. The desert region, the autotrophs are lesser in number as well as heterotrophs dependent on them are also less. Second one, the food is scarce, therefore the number of heterotrophs also reduce. Third, in ocean and seas there are multitudes of zooplankton and phytoplankton are very small microscopic floating plants which we may not see. Fourth one, the food chain in the seas is dependent on these plankton species. Therefore, the number of heterotrophs found in desert region is smaller, but they are found in greater number in the sea. Question number E. Question number D. See the question number D. What damage or harm to ectoparasitic and endoparasitic animals cause? Answer 1. Parasitic organisms depend on the host of the nutrition. Second, ectoparasitic have specialized mouth parts. With the help of these, they suck the blood. Mosquito and bedbugs. The biting insects cause a lot of discomfort. Third one, mosquitoes spread many diseases such as malaria, dengue and elephantiasis. Fourth one, endoparasitic live inside the body of host. Example, roundworm, hookworm, pinworm, etc. Fifth one, they observe host nutrients and cause malnutrition to the host. Both ectoparasitic and endoparasitic cause damage to our health. Question number E. Why is plant food not produced in any other parts of the plant except the green ones? The chlorophyll is present in the green part of the plants. In these parts, photosynthesis take place. This produces food. The non-green parts do not produce food due to lack of chlorophyll. इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है. आप जो है इस वीडियो के माध्यम से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं. तो आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ.